मैम यस बोलो। आज मतलब 2 क्लास लीजिएगा क्या मैम? आज इरिगेशन का और जियोटेक का आज दोनों। हाँ दोनों ही क्लास अभी कंटिन्यू स्टार्ट होगा। क्योंकि मैम मेरा एकदम डिस्चार्ज होने वाला है मैम, इसीलिए मात्र 10% बैटरी है और रात से लाइट नहीं है मैम और पावर बैंक पूरा डिस्चार्ज हो गया है। ओके, तो अभी तो क्लासेस लाइट नहीं कंटिन्यू। मैम रात से। ओके मैम, जितना देर होता है उतना देर करते हैं। ओके। So everyone mark your attendance. So in last class, a state distribution is discussed. So today we start compressibility and consolidation. So from a stress distribution, one or two question is asked in GATE exam, but consolidation and compressibility is very important for GATE exam and also for IES and also for others exam. So comparatively from this chapter, questions asked more. So what is compressibility? What do you mean by compressibility? लोड अप्लाई करके जो सॉइल से एयर हम लोग निकालते हैं मैम, उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। Only air is removed. Is it correct? एयर भी होता है, वाटर भी होता है मैम रिमूव। So what is consolidation? Is there compressibility and consolidation is same? हम कंसोलिडेशन में मॉइस्चर रिमूव करते हैं और कंप्रेसिबिलिटी में एयर वॉइड रिमूव करते हैं, और जिससे डेंसिटी भी इंक्रीज होता है कंप्रेसिबिलिटी में। ऐसा है क्या? कंप्रेसिबिलिटी में करते हैं और कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडिंग होता है मैम। लोड अप्लाई करके मतलब धीरे धीरे वो निकलते रहता है कंसोलिडेशन। So okay. So define a new term that is a compaction. Is it compaction, compressibility and consolidation is same or different? Or compressibility and compaction is same? What is the compressibility and what is the compaction?
जहां तक मुझे याद है मैंने क्लियरली डिफाइन किया है व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। मैम कंप्रेसिबिलिटी में सॉइल का डेंसिटी इंक्रीज करवाते हैं और कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडिंग होता है, वो टाइम के साथ वो वाटर रिलीज होते रहता है सॉइल से, और कॉम्पैक्शन जो कि एयर रिलीज करवाते हैं, एयर वॉइड्स निकालते हैं सॉइल से। ओके, तो इन बोथ टर्म कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन, इन दोनों में डेंसिटी इंक्रीज नहीं होता है? होता है मैम। तो क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलरिटीज है कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन? मैम कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन कॉम्प्रेसिबिलिटी का पार्ट है। और सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी प्रोसेस में क्या होता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी में वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं मैम, और कॉम्पैक्शन में वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं रिमूवल ऑफ एयर करके, एंड कंसोलिडेशन में रिमूवल ऑफ वाटर करके वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं। Exactly, this is the difference. So compressibility is the process in which volume is decreased by any method, by either removing the air or by removing the water. But if we define consolidation, so consolidation and compaction is a method of compressibility. In both process, consolidation and compaction, volume of soil is reduced. So in consolidation, volume of soil is reduced by reducing the pore water, okay, or by reducing moisture. And in compaction, volume is reduced by reducing air, by reducing the air void. Now difference is clear. What is the compressibility, consolidation and compaction? So compressibility is the process of reduce volume or decrease in volume of soil mass due to increasing load. So if we increase the load on the soil strata, then volume is reduced. How volume is reduced? So either air is expulsion, either water is expulsion due to acting load. So compression and expulsion of pore air, volume reduce either due to compression and expulsion of pore air, either due to expulsion of pore water pressure, either due to compression of water and solid molecules, and either due to change in orientation of molecules. So due to this function, compressibility is done or volume reduction is done. So what is the method by which we reduce the soil volume? So either expulsion of pore air, compression and expulsion of pore air, second by expulsion of pore water. This is the method of compressibility, that means method of reduce the volume, decrease the volume of soil by applying external load. So after applying external load, this function may be happened, and due to this function, volume of soil is reduced. Expulsion of pore water, either compression of water and solid molecules also, so it is water is compressible, it is possible. Compression of water, it is possible. Oh ma'am, compression of water. So generally we consider the water is incompressible. Next is the change in the orientation of molecules. Next method is the
change in orientation of soil molecules. Orientation of soil molecules. So these are the method of compressibility. So first method is called compaction. This is called compaction. Why compaction? So air expulsion. So if volume is reduced due to air expulsion, so that process is known as compaction. Okay. Second method, expulsion of pore water. So expulsion of pore water is known as consolidation. So which consolidation? So we studied now. So consolidation is three types: primary, secondary, and tertiary. So expulsion of water is the primary. That is a part of consolidation, and these two method is also a part of consolidation. So let's see in which process, either secondary or tertiary. So these are the method of compressibility. So compaction and consolidation both are the method of what? Method of volume reduction. So what is consolidation? How we define consolidation? So the decrease in soil volume by expulsion out or a squeezing out the pore water on account of gradual dissipation of excess hydrostatic pressure induced by imposed total stress, that is defined as consolidation. So if this is a soil layer, so in this soil layer, water is also available, air is also available. If any stress is act here, total stress is act here over the soil surface, and soil is fully saturated. This soil is fully saturated. So due to increase in effective, if any stress is act, then effective stress in soil is also increases. So due to increase in effective stress over the saturated soil mass, pore pressure is increases. Okay, pore pressure is increases due to external loading. Okay, due to external loading. Why this is increases? So follow Newton's law. So follow Newton's law, this pressure, pore water pressure is increases. So as a result, expulsion of pore water occur. If drainage facility is also provided, then water is expelled out. So in simple way, we can define the consolidation is the decrease in soil volume by expulsion of pore water pressure if any hydrostatic pressure induced by imposing or by increase the total stress is defined as consolidation. Okay, so by definition, in consolidation, pore water is expelled or excused. और expelled out. Okay, बाहर निकल जाता है soil mass से. So total consolidation of soil is divided into three parts, that is primary consolidation, secondary consolidation, and tertiary consolidation. Okay, so in primary consolidation, what is in primary consolidation? So in primary consolidation, soil is in fully saturated state. Okay, so in primary consolidation, soil is in fully saturated condition, and if effective stress is increased due to applied load over the saturated soil mass, then pore water pressure is increases or hydrostatic pressure is increases. So due to hydrostatic pressure increases, expulsion of pore water occur.
if drainage facility is provided. अगर कोई ड्रेनेज फैसिलिटी है तो एक्सपेल्ड आउट होगा, अगर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है तो क्या होगा, सॉइल में वाटर ऑलरेडी रह जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना है उतना रह जाएगा, ठीक है, तो उसका कंसोलिडेशन होगा ही नहीं। Okay, so primary consolidation is completed when expulsion of pore water is stopped. मतलब अगर हमने ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड किया और हमने लोड अप्लाई किया, ड्यू टू external load hydrostatic pressure is increases, and why hydrostatic pressure is increases, pore water pressure increases due to follow of Newton's law, Newton's third law के अकॉर्डिंगली जो हमारा प्रेशर है वो अपर डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाता है। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, अगर ड्रेनेज फैसिलिटी है तो धीरे धीरे करके ड्रेनेज के थ्रू वाटर है जो एक्सपल्ड आउट हो जाता है। अगर टोटल का टोटल वाटर है जो एक्सपल्सन हो गया, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइमरी कंसोलिडेशन। ओके, प्राइमरी कंसोलिडेशन। So during the process of consolidation, soil remains saturated. Okay, soil remains saturated, that is the saturation is 100%, and flow of water is under laminar condition. This point is very important. Flow is under laminar condition. So if laminar flow, that is we can apply Darcy law, but if laminar flow is not available, then we cannot apply Darcy law. Then we have to apply for the analysis which law? Laplace equation. ठीक है, so flow is under laminar condition and volume of expelled water is equal to decrease in volume of soil, which can be measured. So also soil mass is considered semi-infinite and change in volume is equal to change in depth. Clear है? So जितना amount of water बाहर निकलेगा ना, same amount of volume soil का decrease होगा. This point is clear. Volume of expulsion of water is equal to volume of reduction in soil mass. Yes, ma'am. And due to primary consolidation, settlement also occur, which is time dependent, and the time required will depend upon a different equation. So time dependent in different factor on different factor. First is the rate of application of load. So हमने कितना लोड अप्लाई किया, अगर हम लोग बहुत ज्यादा लोड अप्लाई कर लेंगे तो कम समय में हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो टाइम इज ऑल्सो डिपेंड ऑन फर्स्ट फैक्टर, दैट इज द अप्लाइड लोड, रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड. Second is the coefficient of permeability. So if soil is less permeable, if sandy soil is there, then time taken for the primary consolidation for the expulsion of water is very less. But if soil has high permeability, then expulsion of water, rate of expulsion of water is very less. So time is also depend on the permeability of soil. Third factor is the drainage facility, one way or two way. So time also depend on drainage facility. So what is the drainage facility? So the way by which water is expelled out. So अगर सिर्फ बॉटम डायरेक्शन से ही वाटर का एक्सपेल्सन हो तो थोड़ा टाइम लगाएगा एज कंपेयर टू इफ बोथ डायरेक्शन drainage facility is available. Both direction, that means in upper direction also, in downward direction also. ठीक है, तो हमने जब लोड लगाया
लोड की वजह से जो भी फेनोमिना हो रहा है, वाटर है जो स्पेल्ड आउट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बॉटम डायरेक्शन से नहीं, अगर वो जैसे ये हमारा सॉइल मास है, इफ ड्रेनेज फैसिलिटी इन वन वे, दैट मीन्स ओनली दिस फ्रॉम दिस डायरेक्शन वाटर इज एक्सपेल्स आउट, बट इफ ड्रेनेज फैसिलिटी इज इन बोथ डायरेक्शन, देन in this direction also, in this direction also, water is expelled out. Clear है? This is the drainage facility, one way or two way. Also, time is depend on length of drainage path, which depend upon thickness of soil and types of drainage, that is one way or two way. So, time also depend on length of drainage path. That means if only one point is available from which water is spilled out, अगर सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा होल है, बाकी सॉइल के किसी भी पार्ट से पानी नहीं निकल रहा, तो क्या होगा, अगर इस पॉइंट से सिर्फ वाटर को एक्सपेल्ड आउट होना है, इस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ एक्सपल्सन इज वेरी स्लो. ठीक है, तो टाइम इज ऑल्सो डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, विच डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ सॉइल and also type of drainage, that is one way or two way. So these are the factors on which time depends upon for the primary consolidation. So if a saturated mass increase in effective stress is if del sigma, then initially it will be taken by pore water, and hence increase in pore pressure, that is so if expulsion of pore water takes place, then pore water pressure reduce zero, and when expulsion of water stop, then excess pore water pressure becomes zero at the stage of primary consolidation. So if in first stage, this is the soil sample, load is applied sigma, pore water pressure is U. Okay, so if primary consolidation is completed, so if primary consolidation is completed, that means total water is expelled out. Total water is expelled out. Then how much pore water pressure at the end of the primary consolidation stage? Is it any pore water pressure exists? अगर प्राइमरी पोर वाटर प्रेशर तो जीरो हो जाएगा ना. हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, पोर वाटर प्रेशर विल बी जीरो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टेज. ठीक है, सो इफ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर टेक प्लेस, द एक्सिस पोर प्रेशर रिड्यूस, एंड व्हेन एक्सपल्सन ऑफ वाटर स्टॉप, then excess pore pressure becomes zero, and at this stage primary consolidation is complete for given effective stress. So वो same statement is यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जैसे हमारा कंसोलिडेशन होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन, वैसे वैसे हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा. एंड एट द स्टेज व्हेन पोर वाटर प्रेशर, when expulsion of water is stop, expulsion of water stop हो गया, that means what, that means हमारा primary consolidation complete हो गया. At that stage pore water pressure become zero. Clear? Yes ma'am. Next is the secondary consolidation. Secondary consolidation or also second degree consolidation. Or second degree consolidation, both are same, so don't be confused. Second degree or secondary, first degree or prime degree.
So after the completion of primary consolidation, when expulsion of pore water is stopped and load continue to act, then at a very slow rate, further volume change may be recorded, which is due to plastic readjustment of soil, and this is called secondary consolidation, and it is also time dependent, which is much slower than primary consolidation. So what is primary consolidation? So primary consolidation is a start after the secondary consolidation. Secondary consolidation is a start after the completion of primary consolidation. So when it is start? So when expulsion of pore water is expelled, stopped, and load is continue act on the soil surface. Load is continue act on the soil surface. Then what happen in the soil molecules? सो वाटर तो अब है नहीं, वाटर तो सारा प्राइमरी कंसोलिडेशन में एक्सपेल्ड आउट हो गया, स्क्यूज्ड हो गया. तो अभी क्या होगा, तब भी सॉइल पे हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है. फोर्स इज लोड इज कंटिन्यू टू एक्ट ऑन द सॉइल सरफेस. देन सॉइल मोलिक्यूल्स इज रीअरेंज, सॉइल मोलिक्यूल्स इज रीएडजस्ट, है ना? यस मैम. Due to plastic readjustment of solid and due to readjustment of soil molecules, there is a change in volume. There is a reduced in volume, but this reduction rate is very slow as compared to primary consolidation. So this step, this process is called secondary consolidation, and it is also time dependent, and its time is very slow as compared to primary consolidation. So understand the secondary consolidation. So secondary consolidation is more in plastic soil and highly plastic clay. So it may be 10 to 20% volume change. In coarse grain of soil, gravel and sand, secondary consolidation is negligible. So secondary consolidation process soil, sandy soil और gravel में, coarse grain soil में होता ही नहीं है. So generally secondary consolidation is in which soil? Fine soil और clay, है ना? Plastic soil और highly plastic soil. So this point is very important. Secondary consolidation is generally in plastic soil or highly plastic soil. It is negligible in coarse grain soil, that is gravel and sand. Gravel and sand is non-plastic soil. So non-plastic soil में secondary consolidation होता ही नहीं है. But in clay or plastic soil or highly plastic soil, generally secondary consolidation is happened, and this reduction in volume in secondary consolidation is 10 to 20% of total volume change. Clear है? And yes, this start after the completion of प्राइमरी कंसोलिडेशन. मतलब सारा वाटर है जो एक्सपेल्ड आउट हो गया, तभी है जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है. क्लियर? सो प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज क्लियर. अगेन टॉपिक इज normally and over consolidated soil, that is NC soil and OC soil. So what is NC soil and OC soil? NC soil, that is normally consolidated, and OC soil, that is over consolidated. ठीक है? So what is normally consolidated soil? That is also NCS, and this is the OCS. So normally consolidated soil are those soil which are loaded for first time to the present applied effective stress, and it means past applied effective stress was lower than present applied effective stress, and such soil is more compressible.
सो एनसी सॉइल क्या होता है कि इज देयर एनी सॉइल लेयर इज प्रेजेंट, there any soil is present, so at this soil layer a load Q is act. So due to this stress, due to this effective stress, there is a change in volume. So consolidation process is start. So initially Q load is act, and this load is act first time on this soil layer. This load is act, or either we can put the value of Q, that is 100 Newton per meter square. 100 Newton per meter square stress is act on the soil surface first time. ठीक है, so due to 100 Newton meter square load, there is a change in volume. ठीक है, and also if check this history of this soil, then we find that there is also a load is act before this 100 Newton, that is 50 Newton, that is 50 Newton per meter square. So this 50 Newton per meter square load is very less as compared to 100. So अभी जो soil में changes होगा, that is due to 100 Newton per meter square. So this type of load, this type of soil is consolidation due to 100 is known as normally consolidated. सबको समझ में आया या फिर मैं और समझाऊं? So normally ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ. Normally consolidated soil are those soil which are loaded first time with a new load, with a higher load as compared to old load. Simply आसान भाषा में क्या समझा सकते हैं कि कोई सॉइल सैंपल है, कोई सॉइल का लेयर है, उस पे पहले से कोई लोड नहीं था. ठीक है, पहले से कोई लोड नहीं था, मतलब उसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ था, उसका वॉल्यूम में रिडक्शन नहीं हुआ था. उस पे 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड अप्लाई किया गया. ठीक है, so due to 100 Newton per meter square load first time act on the soil surface, then there is a change in volume of the soil sample. ठीक है, so इस टाइप के सॉइल को क्या बोलेंगे? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, कि फर्स्ट टाइम कोई लोड एक्ट हुआ और उस लोड की वजह से उसमें कंसोलिडेशन प्रोसेस हुआ, उसमें वॉल्यूम में चेंज आया. क्लियर है? ये लाइन क्लियर है? फर्स्ट टाइम कोई लोड एक्ट हुआ. अगर दूसरा कंडीशन, जो पास्ट में जो लोड एक्ट हुआ ना, पहले कभी और लोड एक्ट हुआ था सेम सॉइल सैंपल पे, वो 100 नहीं था, 100 से कम था, दैट इज 50. सो 50 की वजह से जो चेंजेस हुआ, दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू प्रेजेंट, एज कंपेयर टू प्रेजेंट लोडिंग. प्रेजेंट में कितना लोड में हमने अप्लाई किया, दैट इज 100. पास्ट में कितना था? 50. तो जो 50 लोड हमने लगाया, जो 50 न्यूटन लगाया, उससे कहीं ज्यादा कंसोलिडेशन कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में हायर लोड एक्ट है. सो दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन इज नोन एज नॉर्मली कंसोलिडेशन. मतलब प्रेजेंट में जो भी लोड एक्ट हुआ है ना, उस वजह से अगर कंसोलिडेशन ज्यादा है, that consolidation either ज्यादा है, either first time consolidation हो रहा है, first time volume reduction हो रहा है, so that is known as normally consolidated soil. अब over consolidation, what is over consolidation or OCS? So over consolidated soil are those which have been subjected to effective stress in past greater than present applied effective stress, and the over consolidated can be differentiated using over consolidated ratio. So what is OCS? So OCS क्या है? इसका अपोजिट है. OCS क्या है? इसका अपोजिट है. कि मतलब क्या, कि प्रेजेंट में हमने क्या किया, प्रेजेंट लोड इज 50 एंड पास्ट लोड इज 100. सो कौन सा लोड है जो इफेक्टिव होगा कंसोलिडेशन के लिए? दिस इज द पास्ट, दिस इज द पास्ट एंड दिस इज द प्रेजेंट. So which is more effective?
for consolidation process? Which load is more effective? Which load is more effective? Just answer me. जो लोड ज्यादा है उसकी वजह से इफेक्टिवनेस हमें क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा. सो इन पास्ट लोड इज मोर. सो पास्ट में जो भी लोड था ना उसकी वजह से प्रेजेंट में हमने जो लोड लगाया उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ. समझ में आया? यस मैम. पास्ट में इतना ज्यादा लोड एक्ट हुआ कि प्रेजेंट में हमने उससे कम लोड लगाया तो सॉइल के रिडक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ. सो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज ओवर कंसोलिडेटेड. मतलब जो पहले से ही कंसोलिडेशन जिसका हो गया था, हमने प्रेजेंट में लोड लगा के भी कोई उसमें फायदा नहीं हुआ. ओवर कंसोलिडेटेड ऑलरेडी सॉइल था, पहले से ऑलरेडी सॉइल क्या था? कंसोलिडेटेड था. दैट इज नोन एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल. Over consolidated soil are those soil which have been subjected to effective stress in past is greater than present applied effective stress. Clear? Yes Now ma'am. NCS and OCS is clear to all? Yes ma'am. किसी को कोई डाउट है नॉर्मली कंसोलिडेटेड एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए? Okay, I think no doubt. So we can calculate a difference in NCS and OCS by OCR. So what is OCR? OCR is the over consolidation ratio. Over consolidation ratio. So over consolidation ratio से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? हमारा सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है या फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड है. नॉर्मली कंसोलिडेटेड मतलब हमने जो प्रेजेंट में लोड लगाया है उसकी वजह से कंसोलिडेशन हुआ है, या फिर ओवर कंसोलिडेशन है मतलब जो पास्ट में जो लोड लगा हुआ था उसकी वजह से ऑलरेडी कंसोलिडेटेड था, प्रेजेंट में जो हमने लोड लगाया वो बेकार हो गया. ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? दैट इज कैलकुलेटेड बाय ओसीआर, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो. ठीक है. Yes ma'am. So it is calculated as OCR is calculated as maximum applied stress in past divided by present applied effective stress. परसेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब हमने पास में कितना मैक्सिमम लोड दिया और प्रेजेंट में कितना लोड दिया, इसका रेशियो में क्या दे देगा? ओवर कंसोलिडेशन रेशियो OCR. So if OCR is greater than 1, that means what? If OCR greater than 1, what is the significance? OCR greater than 1 and OCR less than 1. What is the significance?